Okay. So good afternoon, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. And in our today's session, we are going to learn, going to see some of the most important MCQs regarding William Shakespeare. What are the things that we need to cover, keeping in mind the exam UGC NET. Okay, so let us start. The first thing that you need to remember is that regarding William Shakespeare is that the female characters in his plays are very important. हमेशा जब भी आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो और विलियम शेक्सपियर पढ़ रहे हो तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है दैट यू आर लर्निंग द फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर कि कौन सी फीमेल कैरेक्टर्स इनके कौन से प्लेज में है. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज the setting of his plays. The setting of his plays are very important. From where his plays are set. The fool characters in his plays are important. कि फूल जो हमारा प्ले है जो जोकर का जनरली रोल प्ले करता है वो इनके कौन से प्लेज में है. We all know that William Shakespeare is an important writer of Elizabethan age. He was writing during that period and he is considered as the greatest writer of English literature. माना जाता है कि अगर किसी को इंग्लिश लिटरेचर का थोड़ा सा भी नॉलेज है इट इज बिकॉज ऑफ विलियम शेक्सपियर. Okay, so let us revise William Shakespeare through MCQs. The first question that we have is arrange the plays of William Shakespeare in the chronological order of their year of publication. The first one is The Tempest, next Love, Labour's Lost, Twelfth Night, Much Ado About Nothing and A Midsummer's Night Dream. इनके ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज है यहाँ पे जिनको आपको क्रोनोलॉजी में पुट करना है. Okay, so the correct answer is option number 1. B, E, D, C, A. Love, Labour, Lost was published around 1594 to 1595. Then comes A Midsummer's Night Dream, 1595 to 1596. Then comes Much Ado About Nothing. Then Twelfth Night and then The Tempest. We all know that The Tempest is the last written play by William Shakespeare. ये point आपको याद रखना है, इट इज इम्पॉर्टेंट. अगर इनके प्लेस की यहाँ पे बात करें कि कौन से प्लेस आपको टेक्स्ट से पढ़ने चाहिए तो इनका प्ले द ट्वेल्थ नाइट आपका बाय टेक्स्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए. उसमें से कैरेक्टर बेस्ड एंड कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट. मैलवोलियो का कैरेक्टर वहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है हमारे लिए. उसके बाद नेक्स्ट प्ले अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम. अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम भी इनका थ्रू टेक्स्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए. एंड द लास्ट प्ले इज द टेम्पेस्ट जो आपको टेक्स्ट से पढ़ना है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप बाकी के प्लेस को सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे जो बाकी के प्लेस मेंशन है आप उसका सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक शॉर्ट समरी रिवाइज कर सकते हो एंड कैरेक्टर्स का नाम याद रखना है. फीमेल कैरेक्टर्स इनके सारे के सारे फीमेल कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है. Now, moving towards our next question, which of the following classification was first formalized in the first folio of Shakespeare's play? यहाँ पे आपको बताना है कि शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में इनके किस जॉनर के प्लेस पब्लिश हुए हैं. Sonnets versus longer poems. Second is histories, comedies and tragedies. Third is problem plays. And the fourth one is Jacobean versus Elizabethan plays. किस जॉनर के प्लेस आपको देखने को मिलते हैं. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, histories, comedies and tragedies.
फर्स्ट फोलियो के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि विलियम शेक्सपियर का ये फर्स्ट फोलियो है क्या, इस फर्स्ट फोलियो में ये फर्स्ट फोलियो आता कब है, इनका कब पब्लिश होता है, ये पता होना चाहिए आपको. आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स इन दिस लाइव सेशन. I can, but I want you to do the research because now UGC is checking your command. UGC is literally checking your command on the topic. If I will just spoon feed you, then you'll just simply note it down somewhere and later you'll not revise it. I know that. This happens with the learners, but I want you to work on it. I want you to read about it. So आपको फर्स्ट फोलियो क्या है ये पता होना चाहिए, कब पब्लिश हुआ ये पता होना चाहिए. Next. Okay, it's given here only. The first folio of Shakespeare, published in 1623, was compiled by Thomas Thorpe and George Eld, Ben Jonson and Henry Condell, John Hemmings and Henry Condell, or Edward Blount and Richard Fee. तो यहाँ से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपका बनता है कि फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश हुआ है. इनका सेकेंड फोलियो भी आया था. कब पब्लिश हुआ है, यू नीड टू फाइंड अबाउट दैट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल. ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं नेट पे प्रीवियसली, सो आपको स्ट्रैटेजिकली इसी हिसाब से प्रिपेयर करना है. Next, which of the following plays was first published in the first folio and had not appeared in quarto form before? इनका कौन सा प्ले है जो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था, सबसे पहला पोयम, लेकिन वो क्वार्टरो में नहीं आया है कभी भी इसके पहले? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मैकबेथ. मैकबेथ और हैमलेट ये दोनों आपका थ्रू टेक्स्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए. मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस बनते हैं. हैमलेट तो सबसे इंपॉर्टेंट प्ले हम बोलेंगे इनका. एक्चुअली ऑल हिज ट्रेजेडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. हुकम, दिस इज द फॉर्मूला. हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर, मैकबेथ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट यहाँ पे आपको फर्स्ट फोलियो के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो आपको यहाँ से कवर कर लेना है. That the first folio is the first collected edition of William Shakespeare, which was published in 1623, just after 7 years his death, and it was compiled by his fellow actors John Hemmings and Henry Condell. इस first folio का full title था Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies. Okay? इसमें इनके total 36 plays का compilation देखने को मिलता है. तो फर्स्ट फोलियो जब इनका आया था इसमें 36 प्लेस देखने को मिलता है. सेकेंड फोलियो 1632 में आता है जिसमें आपको इनके माइनर कलेक्शंस देखने को, माइनर करेक्शंस होते हैं उसी प्लेस में और कोई न्यू प्ले ऐड नहीं किया जाता है. थर्ड फोलियो 1663 से 1664 के अराउंड आता है जिसमें 7 प्लेस और ऐड कर दिए गए थे. एंड फोर्थ फोलियो इनका 1685 में आता है विच वॉज बेस्ड ऑन द थर्ड फोलियो एंड बिकेम द standard reading for the 18th century edition. So शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो के बारे में यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट फोलियो में इनके कौन कौन से प्लेस थे जो कि कभी क्वार्टरो में नहीं अपियर हुए हैं? देयर वेर 18 प्लेस जिसका कोई क्वार्टरो वर्जन एग्जिस्ट नहीं करता है बट फर्स्ट फोलियो में देखे गए. ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, सिम्बलिन, Henry VI Part 1, Henry VIII, Julius Caesar, King John, Macbeth, Measure for Measure, The Taming of the Shrew, The Tempest, Timon of Athens, Twelfth Night, The Two Gentlemen of Verona, The Winter's Tale, Coriolanus and Antony and Cleopatra. If I talk यहाँ से कौन से प्लेस आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, As You Like It is a must read text. डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं. फॉरेस्ट ऑफ एड्रेन की सेटिंग देखी जाती है. द टेम्पेस्ट, इनके हिस्टोरिकल प्लेस आपके ये दोनों पढ़े हुए होने चाहिए. मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, द विंटर्स टेल, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा एंड कोरियोलानस. दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेस जो आपका थ्रू टेक्स्ट कवर्ड होना चाहिए. ओके,
ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो आप कवर करोगे. नेक्स्ट, arrange the following literary text in the order of their publication: The Taming of the Shrew, Love, Labour's Lost, The Merchant of Venice, Much Ado About Nothing, and The Winter's Tale. ये शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज है विच यू नीड टू अरेंज क्रोनोलॉजिकली. And the correct option is option number 4. Taming of the Shrew was published between 1590 to 92. Love, Labour, Lost was published between 1594 to 95, we have seen. Merchant of Venice was published around 96 to 97. Much Ado About Nothing was 98 to 99. And The Winter's Tale was 1610 to 1611. So अगर इसको chronologically arrange करें, it is A, B, C, D and E. Next, arrange the following plays by Shakespeare in order of their publication: Twelfth Night, The Taming of the Shrew, Much Ado About Nothing, Romeo and Juliet and The Winter's Tale. ट्वेल्थ नाइट इज अ मस्ट रीड टेक्स्ट. कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं विलियम शेक्सपियर से, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं. फीमेल कैरेक्टर्स पे इनका आपको बहुत ज्यादा फोकस पे करना है. फूल के कैरेक्टर्स पे ध्यान रखना है. जो जोकर का कैरेक्टर होता है, जो कॉमेडी ह्यूमर प्रोवाइड करता है शेक्सपियर के कॉमेडी प्लेज में. सो द कैरेक्टर ऑफ फूल इज इंपॉर्टेंट. फीमेल कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट. सेटिंग ऑफ कॉमेडी प्लेज आर इंपॉर्टेंट. So the correct option is option number 4. That is B, D, C, A and E. हमने अभी देखा पीछे that Twelfth Night was published around, Twelfth Night was 1601. The Winter's Tale was 1610 to 11. Romeo and Juliet was 1595. Much Ado About Nothing is 1598 to 99 and Romeo and Juliet, sorry, The Taming of the Shrew 1590 to 92. So ये publication dates आपको यहाँ से याद रखने हैं. Next question. Which of the following sonnets opens Shakespeare's sonnet sequence? शेक्सपियर के सोनेट सीक्वेंस काफी फेमस है. आपको यहाँ पे बताना है कि इनका कौन सा सोनेट है जो इस सोनेट सीक्वेंस का फर्स्ट सोनेट है. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. फ्रॉम वेरियस क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज. अगर इनके सोनेट्स की बात करें तो Shall I Compare Thee to a Summer's Day is an important sonnet. You need to read this sonnet. Let me not to the marriage of true minds impediments. This one is also important. ये दोनों यूजी और पीजी के सिलेबस में भी मेंशन रहता है, thus it becomes important. Next, how many sonnets are generally attributed to William Shakespeare? 144, 154, 152 or 160. And the correct option is 154. Next, which of the okay, before that we need to see one thing here is sonnet number 1 to 126. It is dedicated to youth
and from 127 to the rest, it is dedicated to a dark lady. Next, which of the following sonnet is famously known as the marriage sonnet? Sonnet 116, 18, 130 और 129. अब इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, ये आप पढ़ते टाइम जब आप ये सब पढ़ोगे तो आपको एक माइंड मैप बन जाएगा आपका, वहां से आपको ये आंसर करना है. इसके लिए आपको स्पेसिफिकली बैठ के इनके सारे 154 सॉनेट्स के नाम और 154 सॉनेट्स के नंबर्स याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर आर वेरी लेस चांस कि शेक्सपियर से क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे. अगर बनेंगे भी तो वो सिंपली मैच द फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन टाइप के क्वेश्चंस ही बनते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. Next, the line "My mistress' eyes are nothing like the sun" is from which sonnet? Sonnet number 130, 29, 18 or 20? It is from sonnet number 130. Next, which of the following themes dominates the first 17 sonnets? Lust and jealousy, procreation and legacy, death and transience, and homosocial rivalry. Correct option is option number B. So the dominant theme in the first 17 sonnets is the poet's urge of a young man to procreate and have children. इसीलिए हमें procreation and legacy का theme देखने को मिलता है. Next, in Shakespeare sonnets, who is the rival poet? The Shakespeare himself, a fictional invention, a poetic competitor for the fair youth's favor, or the dark lady's husband? इस तरह के क्वेश्चंस जनरली नहीं बनते हैं, बट स्टिल the correct option is option number C, a poetic competitor for the fair youth's favor. So यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है which is important. Like Shakespeare has written total 154 sonnets and it was published in first quarto in 1609. Quarto is different and folio is different. अगर इनके फॉर्म्स की बात करें तो सोनेट क्या होता है, तो 14 लाइन का एक पोएम होता है, और शेक्सपियर के जो सोनेट्स है वो 3 क्वार्टरेन्स और एक राइमिंग कपलेट होता है इसमें, जिसको हम लोग वोल्टा भी कहते हैं. राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी का देखने को मिलता है एंड आयम्बिक पेंटामीटर में जनरली इनके सोनेट्स लिखे हुए हैं. यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पता चलता है. सोनेट नंबर 1 to 17 covers the subject of procreation. 1 to 26 covers fair youth sonnets. 127 to 152 is to dark lady sonnets. And sometimes some critic says that it is considered that sonnet number 153 to 154 is dedicated to Cupid, the god of love. But it is controversial. Next question. What literary device is primarily at work in this line? Nor shall death brag, thou wanderest in his shade. Hyperbole, metonymy, apostrophe or personification. इस पर्टिकुलर लाइन में जो शेक्सपियर के सोनेट नंबर 18 से लिया गया है, आपको कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज दिख रहा है? And the correct option is personification. Next, which of the following characters is not murdered in Shakespeare's Macbeth? इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. You have to follow the trend of these questions. Fleance, Lady Macduff, Duncan or Banquo? The correct option is Fleance. यहाँ पे आपको मैकबेथ के प्लेस के बाकी सारे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं.
Now, next, in which play does the following line occur? The quality of mercy is not strained. It dropped as the gentle rain from heaven. Measure for measure, The Merchant of Venice, Othello or The Tempest. ये पर्टिकुलर कोटेशन इनके कौन से प्ले से लिया गया है? You have to identify that. The correct option is The Merchant of Venice. So this particular line is spoken by Portia in Act 4 Scene 1 during her famous courtroom speech about mercy. और यहाँ पे आपको इसके मेजर कैरेक्टर्स दिए हुए. मर्चेंट ऑफ वेनिस को आपको थ्रू टेक्स्ट पढ़ना है. इसमें से कैस्केड सीन इज इंपॉर्टेंट and the dialogue spoken at the time during the time of cascade scene ultimately becomes important from your net perspective. Next, which new historicist critique analyzed King Lear in relation to Renaissance power structures? Terry Eagleton, Stephen Greenblatt, Jonathan Dollimore or Louis Montrose? The correct option is option number B, Stephen Greenblatt. Next, A.C. Bradley is best known for his character-based analysis of which genre of Shakespeare plays? Roman plays, comedies, histories or tragedy? A.C. Bradley is an important critique of Shakespeare. A.C. Bradley ने शेक्सपियर को क्रिटिक करते हुए अपने वर्क्स में काफी बार शेक्सपियर को लेके लिखा है, उनके प्लेस को लेके लिखा है. तो आपको ये बताना है कि एसी ब्रैडले ने शेक्सपियर के कौन से कैरेक्टर पे एनालिसिस करके बोला है कि दिस इज द बेस्ट कैरेक्टर दैट आई नो. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रेजेडीज. तो एसी ब्रैडले ने टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज विच वाज पब्लिश्ड इन 1904, where AC Bradley analyzes 4 major tragedies: Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth. This you need to remember. This becomes an important point for your exam purpose and कि इन्होंने अपने essay में कौन से 4 tragedies को लेके इनका बात किया है: Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. In this very cycle, June 2025, there was a question from Shakespeare in which you have to correctly identify the critics of William Shakespeare. कि किन्होंने कौन कौन से क्रिटिक्स है जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के ऊपर क्रिटिसिज्म प्रोवाइड किया है. So, A.C. Bradley in his work argues that each features a noble hero with a tragic flaw, whose inner conflict and moral choices lead to downfall. He emphasizes the psychological depth, moral order and the emotional impact of pity and fear. ये बोल रहे हैं कि इन चारों प्लेज में जो कैरेक्टर्स है वो एक नोबल हीरो है, लेकिन उनके अंदर एक ट्रैजिक फ्लॉ है जो कि प्लेज में कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए, और वो अपना एक इनर कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए, मॉरल चॉइस पे फंसे हुए हैं, जिससे हमें उनके साइकोलॉजिकल डेप्थ के बारे में पता चलता है, उनका मॉरल ऑर्डर जानने को पता चल रहा है, और ये जो इनका जर्नी है, इमोशनल जर्नी, इट हेल्प्स द रीडर्स टू रीडर्स विथ कैथारसिस, दैट इज पिटी एंड फियर. Next question. Who accused Shakespeare of lacking objective correlative in Hamlet? I would mark this question an NFT. Multiple times the questions have been asked from here. And the correct option is T.S. Eliot. So T.S. Eliot अपने essay में बात करते हैं that इनका जो play है Hamlet, it lacks of objective correlative. He argues that Shakespeare failed to provide a sufficient external expression. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि objective correlative होता क्या है. So you can visit my channel and I have uploaded a short on it, जहां से आपको पता चल जाएगा कि objective correlative होता क्या है. Objective correlative is basically कि आपके dialogues के साथ, आपके expressions के साथ आपका environment भी support करना चाहिए, जिसके लिए टी.एस. इलियट बोलते हैं कि शेक्सपियर फेल्स टू प्रोवाइड द सफिशिएंट एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस लाइक सिंबल्स, एक्शन और इवेंट्स, जिससे हमें हैमलेट के इंटेंस इमोशंस के बारे में पता चले, मीनिंग दैट द प्ले लैक्स एन इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. फिर ये बोलते हैं कि हैमलेट में इनकोहेरेंट इमोशंस है.
स्पेशली टूवर्ड्स हिज मदर, विच आर वेग एंड एक्सेसिव। कोई जरूरत नहीं था इस चीज का। देन ये बोलते हैं रिविजन इश्यूज, ये बोलते हैं दैट द प्लेज आर ओवर रिटन एंड इनकंसिस्टेंट ड्यू टू मल्टीपल रिविजन्स, क्योंकि ये जो प्ले है इसका इतना ज्यादा ट्रांसलेशंस आया हुआ है, रिविजन वर्जन आया हुआ है, जिसके कारण वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं मिसलीड हो गया है। देन द क्रिटिक ऑफ रोमांटिक critiques. Eliot criticizes romantic interpretations as well, like those by Goethe and Coleridge, for projecting their own emotional struggle onto Hamlet. तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल अपने ऐसे में हमें ये बताते हैं कि हैमलेट का जो कैरेक्टर है वो जैसा शेक्सपियर ने बताना चाहा, हो सकता है कि वो क्रिटिक्स के इंटरप्रिटेशंस के कारण मिसलीड हो गया है, जिसके कारण हमें उसमें एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव लैक होते हुए दिखाई देता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Harold Bloom's Shakespeare, The Invention of the Human, argues that this is a critical work written by Harold Bloom on Shakespeare, and आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये वर्क किस चीज के बारे में बात करता है। Shakespeare borrowed most of his character from historical chronicles. B. Shakespeare created the modern idea of personality through his characters. C. Shakespeare's greatness lies primarily in his plots. Or D. Shakespeare's influence has been overstated. So Bloom saw Shakespeare as the central to the formation of modern human consciousness, and thus he says that Shakespeare created the modern idea of personality through his characters. इस ऐसे का आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। Next, in preface to Shakespeare, Samuel Johnson defends Shakespeare's mixing of tragedy and comedy by arguing that Shakespeare misunderstood classical unities. Life itself is a mingled yarn of joy and sorrow. The audience of his time demanded variety, and the tragedy was subordinate to comedy. Dr. Samuel Johnson also becomes an important critique of William Shakespeare. In his work in Preface to Shakespeare, he talks where William Shakespeare lacks the unities. 2025 जून में डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि according to Dr. Samuel Johnson in his work in Preface to Shakespeare, he says that Shakespeare neglected which two unities? So it was unity of time and place. शेक्सपियर के प्लेज में डॉक्टर जॉनसन बोलते हैं ये दो यूनिटी लैक करता है। द ओनली यूनिटी दैट वी सी इज यूनिटी ऑफ एक्शन, एंड इट इज not sufficient to make the plays a great play, but शेक्सपियर के जो प्लेज है वो यूनिटी ऑफ एक्शन में इतने परफेक्ट है दैट यू कैन नेग्लेक्ट यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, लाइफ इटसेल्फ इज अ मिंगल्ड yarn ऑफ जॉय एंड सॉरो। क्योंकि इनके ट्रैजिक कॉमेडी प्लेस को लेके, शेक्सपियर के ट्रैजिक कॉमेडी प्लेस को लेके काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म प्रोवाइड किया गया था, तो जिसको डिफेंड करते हुए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि लाइफ कभी ट्रैजिक पूरा नहीं होता, कभी पूरा कॉमिक नहीं होता है। तो अगर लाइफ वैसा है तो शेक्सपियर इसीलिए रियल कैरेक्टर से इंस्पायर होकर अपने वर्क्स में वही चीज पोर्ट्रे कर रहे हैं। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ट्रैजिक कॉमेडी प्लेस? दिस इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट। So Johnson praises Shakespeare realism in blending the genres. Next, who famously described Shakespeare as not of an age but for all time? Dr. Samuel Johnson, T.S. Eliot, Alexander Pope, or Ben Jonson? The correct option is Ben Jonson. So Ben Jonson described Shakespeare as not of an age but for all time. इसी तरह के क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग शेक्सपियर। बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बट बहुत कम भी नहीं पढ़ के जाना है आपको शेक्सपियर को। नेक्स्ट, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। ये कोटेशन कहाँ से लिया गया है? जिस प्ले से लिया गया है दैट प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट in your UG also, in your PG and in your competitive exams as well.
This particular statement is taken from the play As You Like It, and the speaker is Jax, and he is saying this to Duke Senior and others in Act 2, Scene 7. Now, this is an interesting question. You have to match the characters with the plays. Banco, Prospero, Mercuto, and Portia. And the plays are The Merchant of Venice, Macbeth, The Tempest, Romeo and Juliet. And the correct answer is option number A. That is, Banco is seen in Macbeth, Prospero is seen in The Tempest, Mercuto is seen in Romeo and Juliet, and Portia is seen in The Merchant of Venice. If you would have matched just the character of Portia also, you could have reached the answer. नेट में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जस्ट 2 सेकेंड्स लगता है आपको आंसर करने में. इनको हम लोग टाइम सेविंग क्वेश्चंस कहते हैं. ये क्वेश्चंस अगर आप एक भी ऑप्शन मैच कर लेते हो तो आपके सारे ऑप्शन सही से मैच हो जाते हैं. इसी तरह के क्वेश्चंस जो है ओवरऑल आपका टाइम बचाते हैं. सो इफ यू आर गेटिंग एनी सच क्वेश्चन तो आप पूरा आंसर मत पढ़ो. डोंट पुट योर टाइम इन सच क्वेश्चंस. नेक्स्ट, again you have to match some characters with the plays. Launce, Lucio, Richard and Titania, and the plays are Measure for Measure, The Two Gentlemen of Verona, Richard II and A Midsummer's Night Dream. And the correct option is option number B. Launce will be matched with The Two Gentlemen of Verona. Lucio will be matched with Measure for Measure. Richard will be matched with Richard II. And Titania will be matched with A Midsummer's Night Dream. Again, if you would have just used the common sense and matched Richard, then you could have reached the answer. Next, we have again matched the following. We have to match the characters with the plays. We have characters of Cleopatra, Beatrice, Viola and Horatio. ये सारे characters नेट में पूछे भी गए हैं. And the plays are Hamlet, Antony and Cleopatra, Much Ado About Nothing and 12th Night. And the correct option is option number C. Cleopatra will be matched with Antony and Cleopatra, Beatrice with Much Ado About Nothing, Viola with 12th Night and Horatio with Hamlet. Next question. The next question is again match the following, where you have to match the characters with the plays. ये सारे जो क्वेश्चंस है यहाँ से आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा. ऑलमोस्ट 70% रिगार्डिंग द टॉपिक विलियम शेक्सपियर आप यहाँ से कवर कर सकते हो. सिंपली आपको यहाँ से नोट्स बनाते चलना है. प्लेज लिख लो, उनका पब्लिकेशन डेट लिख लो, कॉलम्स ड्रॉ करके, और यहाँ पे कैरेक्टर्स के नाम लिखते चलो. So by the end of the video, you'll have a good list of his plays, publication date and characters all at one place. And side by side, वहीं पे आप एक दूसरे पेज में famous quotations जो यहाँ पे है, आप उनको लिखते चलो. You'll have a good notes prepared on William Shakespeare. And apart from this, you are not supposed to prepare anything if you are preparing for the exam. It will save a lot of your time.
So the characters are Emilia, Ariel, Saturninus or Sinu. Plays are Twelfth Night, The Tempest, Othello and Titus Andronicus. The correct option is option number A. Emilia will be matched with Othello. Ariel will be matched with The Tempest. Saturninus will be matched with Titus Andronicus and Orsino with Twelfth Night. Orsino with Twelfth Night. Next. Though this be madness, yet there is method in it. You have to identify from which play this particular quotation is from. And the correct option is option number C, Hamlet. The speaker is Polonius, and Polonius speaks this particular line in Act 2, Scene 2. Next, uneasy lies the head that wears a crown. This is a PYQ. ये क्वेश्चन डायरेक्ट नेट में पूछा गया. रिचर्ड द सेकंड, मैकबेथ, हेनरी IV पार्ट 2 एंड किंग जॉन. किस प्ले से ये कोटेशन लिया गया है? The correct option is option number C, Henry IV Part 2. इनका जो प्ले है हेनरी IV Part 1, Part 2 एंड हेनरी द फिफ्थ, ये सारे प्लेस आपके, ये तीनों प्लेस पढ़े हुए होने चाहिए. यूजी और पीजी सिलेबस में भी मेंशन्ड है. Thus it becomes important for your नेट पर्सपेक्टिव एज वेल. इसमें फॉल्स्टाफ का कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा. फॉल्स्टाफ का कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट. Next, I am a man more sinned against than sinning. ये कोटेशन किस प्ले से है इनका? किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट और जूलियस सीजर. You can type your answers in the comment section. That will make the session more engaging. I am a man more sinned against than sinning is from King Lear, and the speaker is King Lear itself. It's a soliloquy. This line is a soliloquy, and it is said in Act 3, Scene 2. Okay, this the most famous quotation, most famous. What's in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet? Much Ado About Nothing, Love, Labour Lost, Romeo and Juliet or Twelfth Night. So this particular quotation is from Romeo and Juliet. Okay, next question. Now, statement based question. You have to identify कि according to the options कौन से statement suit कर रहे हैं आपको. Henry IV Part 1 introduces the character of Sir John Falstaff. Statement 2 says Falstaff also appears in The Tempest as Prospero's jester. Jester is a fool character. So according to these statements, you have to identify. I have already told you about the character of Falstaff. The full name is Sir John Falstaff. ये एक बहुत ही important character बनते हैं. Not just for the competitive exam, but अगर आप UG में हो और PG में हो और अपने exams के लिए answers लिख रहे हो, Falstaff का character sketch जरूर पढ़ेंगे. And the correct option is option number B. Statement 1 is true, but 2 is false.
Falstaff is a comic figure in Henry IV. Henry IV पार्ट 1 में भी है, पार्ट 2 में भी है, एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडस्टर में भी ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है. इन्हीं का प्ले है विलियम शेक्सपियर का, बट टेम्पेस्ट में ये कैरेक्टर नहीं है. सो आई होप दैट यू आर गेटिंग कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में. इसी तरह के क्वेश्चंस बनते, और अगर आपके प्लेज नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते उस टाइम पे, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हो. ये तुक्का लगाने वाला क्वेश्चंस नहीं है कि आपने गेस किया और सही हो गया. ये क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल स्टेटमेंट पे बने हुए क्वेश्चंस हैं, जिसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है. So statement 1 says Shakespeare changed the ending to a comic resolution to suit Elizabethan taste. यानी कि शेक्सपियर ने अपने प्लेस का टेस्ट बदल दिया था, एंडिंग बदल दिया था अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथन थिएटर. And statement 2 says Othello was inspired by a short story by Giraldi Cinthio. So the correct answer is option number C. Statement 1 is false but 2 is true. ऑथेलो की एंडिंग जो है वो अनडिनाइबली ट्रैजिक ही रहती है, इसीलिए प्ले कंक्लूड्स विद द डेथ ऑफ ऑथेलो, डेस्डिमोना एंड एमिलिया. तो इन्होंने कोई भी अपना प्ले का एंडिंग नहीं बदला है, एंड दिस आउटकम इज अ रिजल्ट ऑफ यागोस मैनिपुलेटिव स्कीमिंग. बट ऑथेलो जो है वो इस प्ले से इंस्पायर हुआ है, इस शॉर्ट स्टोरी से इंस्पायर हुआ है. और स्टेटमेंट 1 फॉल्स इसीलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कॉमिक प्लेस की एंडिंग नहीं बदली थी अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथन टेस्ट. Next question. You have to match the plays of Shakespeare with their literary or historical sources. Sources एक बहुत important point बनता है if you are reading the plays of William Shakespeare. Soon I'll upload a video जिसमें आपको important female characters, setting, important sources बता देंगे plays के. So you can cover that from there. क्योंकि इस विलियम शेक्सपियर के मोस्ट ऑफ द प्लेस जो है वो कहीं ना कहीं से किसी का प्लॉट लिया हुआ है, कैरेक्टर इंस्पिरेशन लेके ही बनाया गया है. So the correct option is option number D. That is Troilus and Cressida का सोर्स है The Histories of Troy via Chaucer and Lydgate. The Winter's Tale Pandesto by Robert Greene. Measure for Measure is Promise and Cassandra by George Wheatstone. And Hamlet is Gesta Danorum by Saxo Grammaticus. Next, again you have to match the plays with their sources. I hope that you all are noting the important points from here. Or you can simply join my Telegram channel. The link will be provided in my description. You can join my Telegram channel from there and you will get this PDF uploaded there. तो वहाँ से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन रिवाइज इट और टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट. प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलेगा आपको वहाँ पे ये. So the correct option is option number A. Cymbeline will be matched with 3. Merchant of Venice will be matched with 2. Much Ado About Nothing will be matched with 4 and Julius Caesar will be matched with 1. Next. Statement 1 says Titus Andronicus is among Shakespeare's earliest tragedies. And statement 2 says it exemplifies the influence of Seneca revenge drama. Now, आपको सेनेकन प्लेस के बारे में पता होना चाहिए. इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए. डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से. अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आइडेंटिफाई करने रहते हैं.
सो यहाँ पे हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, क्योंकि टाइटस एंड्रोनिकस इनका अर्लीस्ट ट्रेजेडी नहीं है, एंड इनके प्लेज में आपको सेनेकन रिवेंज ड्रामा देखने को मिलेगा, बट टाइटस एंड्रोनिकस में स्पेसिफिकली नहीं है. नाउ दिस वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क. आप इसको सॉल्व करो, आपका कमेंट में पिन अपना आंसर पिन डाउन कर देना, एंड आई विल रिवील द आंसर इन द नेक्स्ट सेशन. In which of the following plays by Ben Jonson is William Shakespeare believed to have performed? Walpole, Every Man in His Humour, The Alchemist, or none of the above? This is a very easy question, yet very typical if you have not read about William Shakespeare in depth. Okay, I'm giving you 1 minute. आप यहीं पे आंसर कमेंट में बता सकते हो. I would in which of the following plays of Ben Jonson William Shakespeare believed to have performed? ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना हुआ है आपके नेट के एग्जाम में. In which of the following plays by Ben Jonson is William Shakespeare believed to have performed? The correct option is Every Man in His Humour. Okay, so now I would like to end my session, but before that, just give me a minute. Okay, so you can join my Telegram channel. The link will be provided in the description, and you will get this PDF there, or you can simply note down all the important points. आपको points note down करने के लिए क्या करना है? I'm repeating it again. Take a page, draw some columns, and label them as plays, publication date, characters. यहाँ पे जितने plays हमने discuss किए हैं, just write the names, और उसका publication date पता चल रहा है वो लिखिए, and characters के नाम लिखते चलिए. Important characters पे ही यहाँ पे questions बने हुए हैं. Keep them noting down, and in the end you will have a good list prepared with you. You will have a good list जिसको आप simply last moment पे revise करके जा सकते हो. कुछ important quotations आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यही quotations करना है. Apart from that, अगर कोई important quotation है तो आप PYQ से cover करोगे. किसी भी टेक्स्ट का quotation PYQ से ही cover करना है, क्योंकि आपको कैसे पता कि क्या important है क्या नहीं है. So keep these points in mind. I hope the session was helpful to you. Have a lovely day, learners.